Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will be dealing with another important type of cancer, that is stomach cancer. Let's begin with the lecture. Before that, please do like, share, comment and subscribe to my channel. Anatomy of the stomach. The lower esophageal sphincter, the pyloric sphincter, greater curvature, lesser curvature, esophagus, cardia, fundus, body, pylorus, duodenum. अभी हम फंक्शंस देखते हैं स्टमक के. फंक्शन ऑफ द स्टमक आर द शॉर्ट टर्म फूड रिजर्वियर. यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए फूड रिजर्व होता है, स्टोर होते हैं. और साइट ऑफ डाइजेशन, यहाँ पे फूड डाइजेस्ट होता है बाय सिक्रेटिंग एसिड एंड एंजाइम्स दैट हेल्प फॉर फूड डाइजेशन. कायम द बॉडी bolus by its three layer of smooth muscles, longitudinal, circular, oblique. Evacuation of gastric contents slowly into the small intestine. यहाँ से जो गैस्ट्रिक कंटेंट वो स्लोली स्मॉल इंटेस्टाइन से बाहर जाता है थ्रू द पाइलोरस. अब स्टमक कैंसर क्या है वो जानते हैं, उसका डेफिनेशन. स्टमक कैंसर और गैस्ट्रिक कैंसर, उसको गैस्ट्रिक कैंसर भी बोल सकते हैं, इज़ अ मैलिग्नेंट ट्यूमर दैट फॉर्म्स इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक. जो अंदर का पेट का वो लाइनिंग होता है वहाँ पे वो होता है. इट ऑफ्टन स्टार्ट्स इन द सेल्स दैट प्रोड्यूसेस म्यूकस एंड कैन स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. अदर पार्ट ऑफ द बॉडी में भी स्प्रेड हो सकता है. उसके स्टेजेस देखते हैं. उसके 4 स्टेजेस हैं, 0, 1, 2, 3 एंड 4. और उसके 4 लेयर हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मसल एंड आउटर लेयर सिरोसा. 0 जो स्टेज है वो सिर्फ म्यूकोसा में होता है. स्टेज 1 म्यूकोसा और सब म्यूकोसा में स्प्रेड हो जाता है. स्टेज 2 में म्यूकोसा, सब म्यूकोसा मसल लेयर में स्प्रेड हो जाता है. स्टेज 3 में और फोल लेयर्स में हो जाता है इंक्लूडिंग सिरोसा. एंड इन 4th स्टेज में वो सिरोसा से बाहर हो जाता है, वो अपर स्किन है वहाँ से बाहर की तरफ जाता है. रिस्क फैक्टर्स देखते हैं. एनवायरमेंटल फैक्टर, लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, डाइट इन लो fiber diet, high consumption of salt and preserved or smoked food, then smoking, precursor conditions, then previous partial gastrectomy or benign diseases, chronic atrophic gastritis, pernicious anemia, helicobacter pyloric infection. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, helicobacter pyloric infection. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं. अर्ली मैनिफेस्टेशंस आर, इन अर्ली मैनिफेस्टेशन एंड लेट मैनिफेस्टेशन इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2. इन अर्ली मैनिफेस्टेशन प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ एपेटाइट, ब्लड इन स्टूल, वॉमिटिंग. देन लेटर मैनिफेस्टेशंस आर पेन यूजुअली इंड्यूस्ड बाय ईटिंग एंड रिलीव्ड बाय वॉमिटिंग. जब हम खाते हैं तब वो ज़्यादा पेन हो जाता है और जब वॉमिटिंग करते हैं तो रिलीव हो जाता है, पेन कम हो जाता है. वेट लॉस और लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, एबनॉमिनल और एपिगैस्ट्रिक मास. कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? ऑब्स्ट्रक्शंस, ट्यूमर कैन ब्लॉक द स्टमक लीडिंग टू डिफिकल्टी इन swallowing एंड डाइजेशन. परफोरेशन, द एडवांस कैंसर ऑफ द स्टमक वॉल टू रप्चर लीडिंग टू पेरिटोनाइटिस. वो स्टमक फूल जाता है. मेटास्टेसिस, वहाँ कैंसर कैन स्प्रेड टू अदर ऑर्गन्स लाइक लीवर, लंग, पेरिटोनियम. कंप्लीटिंग ट्रीटमेंट एंड प्रोग्नोसिस. ब्लीडिंग हो सकता है. ट्यूमर में एडर blood vessels causing gastrointestinal bleeding which can be life threatening. malnutrition, ascites, पेट फूल के वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है. अभी डायग्नोसिस देखते हैं वो कैसे डायग्नोस हो जाता है. मेडिकल हिस्ट्री एंड सिम्टम्स. पहले मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं और सिम्टम्स देखते हैं. इवेलुएशन ऑफ द सिम्टम्स सच एज परसिस्टेंट एब्डोमिनल पेन, नॉजिया, वॉमिटिंग, वेट लॉस एंड एपेटाइट. जिसको कैंसर है उसको ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि उसको एब्डोमिनल पेन है, नॉजिया है, वॉमिटिंग है, वेट लॉस एंड एपेटाइट चेंज है. देन ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन, असेसमेंट ऑफ द एब्डोमिन फॉर टेंडरनेस, मासेस एंड साइंस ऑफ एनीमिया और माल न्यूट्रिशन. देन फिजिकल एग्जामिनेशन में ये सब देखते हैं. देन एंडोस्कोपी करते हैं. एंडोस्कोपी में क्या देते हैं? अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल endoscopy allows direct visualization of the stomach lining. Biopsy can be taken during this procedure for histological analysis. जब एंडोस्कोपी होते हैं तभी बायोप्सी के लिए उसका सैंपल लेते हैं और हिस्टोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं.
Then imaging tests such as CT scan, MRI, X-ray, then PET scan usually for detection of metastasis, biopsy analysis, histopathological examination of tissue sample confirm the presence of a cancer cell and determine the type and grade of cancer, blood test, CBC, LFTs. देन मैनेजमेंट मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी. इन कीमोथेरेपी का एम है क्या है, टू श्रिंक द ट्यूमर. वो ट्यूमर को जो कोड देता है, श्रिंक करता है, टू प्रिवेंट कैंसर स्प्रेड. Conventional chemo drugs used in gastric cancer include 5-fluorouracil, interfere with DNA and RNA synthesis, myomycin, interfere with DNA synthesis and prevent cancer cell growth, cisplatin, etoposide, leucovorin, doxorubicin. देन रेडिएशन थेरेपी करते हैं. वहाँ पे क्या करते हैं, रेडिएशन थेरेपी यूजेस हाई एनर्जी बीम, टिपिकली एक्सरेज और प्रोटॉन, to damage or destroy the cancer cell. The radiation disrupts the DNA of cancer cell, preventing them from growing and dividing, ultimately leading to cell death. Symptomatic treatment. Pain management, use of analgesic including opioids if necessary to manage pain effectively. Then nutritional support, provide necessary nutrition through parenteral route if the patient cannot tolerate oral feed. Then surgical management, gastrectomy, it is the surgical procedure in which the affected part of the stomach is surgically removed. गैस्ट्रेक्टॉमी ये मोस्टली करते हैं जहाँ पे वो जहाँ पे कैंसरस पार्ट है वो सर्जिकली रिमूव करते हैं. टू टाइप ऑफ गैस्ट्रेक्टॉमी, सब टोटल गैस्ट्रेक्टॉमी और डिस्टल सब टोटल गैस्ट्रेक्टॉमी. Subtotal gastrectomy or total gastrectomy. In subtotal gastrectomy, remove the part of the stomach and the stump of the stomach is anastomized with the jejunum. Two type of subtotal gastrectomy are distal subtotal gastrectomy, proximal subtotal gastrectomy. In total gastrectomy, it is a complete removal of stomach and continuity of GI is maintained by एनास्टोमोसिस बिटवीन इसोफेगस एंड जूजिनम. वहाँ पे इसोफेगस और जूजिनम में कनेक्शन होता है. देन एंडोस्कोपिक म्यूकोजल resection indication, early stage gastric cancer procedure. Endoscopy is inserted through the mouth into the stomach and use a specialized instrument. Target mucosal area is removed. Targeted area remove करते हैं. देन नर्सिंग मैनेजमेंट देखते हैं. नर्सिंग मैनेजमेंट, यहाँ पे नर्सिंग डायग्नोसिस है. एक्यूट पेन रिलेटेड टू ट्यूमर इन्वेजन, जो ट्यूमर होता है उसके वजह से जो पेन होता है उसके लिए एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है. द पेशेंट विल रिपोर्ट टू रिडक्शन इन पेन लेवल टू अ मैनेजेबल लेवल, दैट इज़ 3/10. इंटरवेंशंस क्या है इसकी, असेस द फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द पेन. Assess the frequency, check करना intensity and duration of the pain. Administration of the analgesic as prescribed. A continuous infusion of the opioid may be necessary for severe pain. Assess the effectiveness of the analgesic being administered. Work with the patient to manage pain by suggesting non-pharmacological method for pain relief such as piston change, such as position, उसका position change करते हैं. इमेजरी डिस्ट्रक्शन, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करने को बोलते हैं. यूजिंग रिलैक्सेशन ऑडियो टेप्स, बैक रब्स, मसाज एंड पीरियड्स ऑफ रेस्ट एंड रिलैक्सेशन. दूसरा है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट टू एनोरेक्सिया. इन एक्सपेक्टेड आउटकम, द पेशेंट विल डेमोन्स्ट्रेट द इंक्रीज इन द in the daily caloric intake to meet nutritional need, that is achieving a specific caloric goal without 1 week. Interventions क्या है इसकी, assess the patient tolerance to oral feed, assess the for signs of dehydration. Nurses monitors the IV therapy and nutritional status and record intake, output and daily weight to ensure that the patient is maintaining or gaining weight. Encourage the patient to eat frequent portion of the non-irritating food
To decrease gastric irritation, food supplements should be high in calorie as well as vitamin A and C and iron. If the patient is unable to eat adequately to meet the nutritional requirement, the parenteral nutrition may be necessary. Then anxiety के लिए देखते हैं. Anxiety related to disease and anticipated treatment, expected outcome. Patient will be verbalize understanding about the treatment modalities. Interventions क्या है इसके? Relaxed non-threatening atmosphere is provided to that patient can express fear, concern and possible anger about the diagnosis and prognosis. The nurses encourage the family in their efforts to support the patient, offering reassurance and supporting positive coping measures. Nurses advise the patient about any procedure and treatment so that the patient knows what to expect. Use relaxation therapy such as deep breathing, progressive muscle relaxation and guided imaginary can reduce the anxiety. नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट अंडरगोइंग सर्जरी. प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी में क्या होता है वो देखते हैं. नर्सिस का रोल क्या है प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर में? कॉम्प्रहेंसिव मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन. ऑपरेशन से पहले कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करना होता है. देन एसेस न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड बॉडी वेट. देन पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करते हैं और बॉडी वेट देखते हैं. एवेलुएट फॉर एनी कॉमोर्बिडिटीज़, एग्जाम्पल डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस. देखते हैं कि पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई ऑलरेडी प्रीवियस डिसीज कंडीशन प्रेजेंट है या नहीं. एजुकेशन, पेशेंट को एजुकेट करते हैं इंक्लूडिंग द फैमिली. एक्सप्लेन द प्रोसीजर, रिस्क फैक्टर एंड एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द प्रोसीजर. Then discuss dietary changes post surgery and the importance of adherence. Consent should be obtained from the patient and the family. Laboratory test, complete blood count, electrolyte level, liver function test, and imaginary study as needed. Medication management, review and adjust medication, anticoagulant, diabetic medication. Consider prophylactic antibiotic to prevent infection. Midnight before surgery. Post-operative care, monitor vital signs including temperature, pulse and blood pressure. Monitor for signs of complication, example bleeding, infection. Pain management, administer analgesic as prescribed and assess pain level regularly. Nutritional management, gradual reintroduction of the oral intake starting with clear liquid and advance as tolerated. Monitor for signs of dumping syndrome or nutritional deficiency. Wound care, inspect the surgical site for signs of infection or dehiscence. Then change dressing as per protocol. Then activity and morbidity, encourage early ambulation to prevent thromboembolic events. Then provide guidance on activity restriction based on surgeon's order. Education, teach about dietary modification, importance of vitamin and mineral supplements. Discuss signs and symptoms of complications that require medical attention. Thank you everyone. I hope you understand the video. If you have any doubt, please comment, like, share and subscribe. If you like the video, then share it with your friends. Thank you.